Assalamu alaikum. Welcome to the 13th lecture of data mining. So today we will most likely conclude our discussion on frequent pattern mining and association rule mining. Uh, in the previous lecture, we had talked about some measures for evaluating patterns that are discovered through frequent item set mining and association rule mining. And we discussed a number of measures, and then we also discussed their characteristics and uh, kind of decided which types of measures are generally better for um, evaluating such patterns. So today we will continue with our discussion on some other variations in the applications of item set mining. And then finally, we'll talk about constraint-based item set mining or association rule mining. So at the end of today, you also have a lecture starting at around 6:05 p.m. So that is all. That is the agenda for today. So are there any questions? So can you see my screen? Yes, sir. Okay. So if there are no questions, then I will get started. Uh, so last time we discussed a bunch of measures for evaluating. Yes, we do have a quiz. I mentioned this last time. So we have a quiz starting at 6:05. All right. So we were looking at measures for quantifying relationships between item sets in rules. For example, you have a rule like this. So this is a rule. So we discussed a number of measures. So these measures have different names. You can call them co-occurrence measures. We can also call them relationship measures. You can also call similarity measures. Because in essence, what is happening here is you're trying to relate what is occurring on the left-hand side with what is happening on the right-hand side. So it could be like a similarity measure, it could be like a quantification of a relationship. Uh, it could be a quantification of how those two item sets co-occur, which is actually what really happens in an item set mining scenario. Okay? And then, of course, from that, you also talk about things like conditional probability and you talk about things like correlation. So, all of these are different names, but slight different connotations. But in any case, whenever you have a measure, you need to know its properties and you need to know what it really means. So, that was the whole idea of our discussion last time. And just a few other measures I wanted to add, although they are less commonly used, but you might see them in the literature. We have a measure called all confidence for some rule, let's say A, or in general for some pattern AB, or let's say A and B. So A is on the left hand side, B is on the right hand side. So this basically is min of confidence. A implies B and confidence B implies A. ठीक है? So the two confidence का जो min है, that is called all confidence. Although some of these have non-intuitive names, but that's how it is. So in दोनों में से जो min होगा, that is all confidence. Similarly, we have a measure called max confidence, which is more intuitive,
दिस इज एसेंशियली मैक्स ऑफ जो ऊपर चीज लिखी थी मैंने, ए implies B and confidence of B implies A. ठीक है, so this is all this max confidence. And we have what is known as coherence as well. Coherence for A and B, where can be on the left hand side and B can be on the right hand side or vice versa. This is basically support of AB divided by support of A plus support of B minus support of AB. ठीक है, so this is coherence. So all of these measures are actually also null invariant. ठीक है ना, null invariant हमने last time बात किया था, तो ये भी examples हैं null invariant के. Last time हमने 4-5 भी discuss किए थे, और these are some additional null invariant variables. जो all confidence और max confidence, you can see the trend. Let's say कोई भी आपके पास लंबा सा item set है, A, B, C, D, इससे बेशुमार rules बन सकते हैं. सो ऑल कॉन्फिडेंस और मिन मैक्स कॉन्फिडेंस से आपको पता चल जाता है कि कौन सा इसमें से जो रूल बन रहा है वुड हैव द मैक्सिमम कॉन्फिडेंस, और ऑल कॉन्फिडेंस में से पता लगेगा इनमें से जो भी रूल्स बन रहे हैं उसमें किसका मिनिमम है. सो ऑल कॉन्फिडेंस और मैक्स कॉन्फिडेंस डिफाइन एंड एज वेल एज कोहेरेंस डिफाइन फॉर पैटर्न्स, फॉर ऑल द पॉसिबल पैटर्न दैट कैन अराइज फ्रॉम दैट आइटम सेट. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी मेरे पास आइटम सेट है, इसमें बेशुमार रूल्स बन सकते हैं. सो ए बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, C on the right, C on the left hand side, AB on the right, and so on. ठीक है ना, तो all confidence, max confidence, coherence would give you just one value. ठीक है, just like as you saw, although yeah that's not quite true, Kulzinski जो imbalance ratio है वो item set पे नहीं defined होता, वो rule पे defined होता है. For example जो हमने Kulzinski define किया था, what this was specific for A implies B. ठीक है, because उसमें एक्चुअली कुजिंस्की इज एप्लीकेबल फॉर आइटम सेट एज वेल, बट वो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है. ठीक है, तो इफ देयर आर मोर देन 2 आइटम्स देन ऑब्वियसली उसमें पे ऑप्शंस हो सकती हैं. ठीक है, सो so this was kind of some additional stuff from previous lecture. So now last time we discussed predicate sets. ठीक है, and predicate sets arise in multi-dimensional association rule mining. ठीक है, so we said that when you have more than one dimension in a rule or in an item set, we say it is multidimensional rule mining, and we call that dimension and value combination a predicate. And then the sets of such, you can say predicates, are called predicate sets. ठीक है, तो obviously इसमें different किस्म के rules आ सकते हैं depending on your data set. ठीक है, so for example you can have, for example, gender is equal to male. That's one item on the left hand side. Then you might have, let's say, buys, let's say let's say jewelry. And then on the right hand side you still maybe have, let's say, buy, let's say mobile phone, for example. So they could be repeated predicates as long as that is permitted in your data set. For example, buy is now considered a set, and there might be multiple items that might be associated with buys. ठीक है, but in general whenever you have attribute value pairs you cannot have repetitions because that is not allowed in the data set.
ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिलेशनल डेटाबेस है, कोई एक एट्रीब्यूट है ए, उसके 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो दोनों वैल्यूज, मतलब फॉर एनी ऑब्जर्वेशन यू कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू, एंड ऑफ कोर्स एज सच यू कैन नॉट हैव a rule that has both of those in the same. So for example, a1 is equal to v1 and a1 is equal to v2 is not possible. ठीक है, or in other words, such a rule would have such a item set or predicate set would have a count of 0. ठीक है, तो so sometimes you have attributes that are numeric. So for example, age आपके पास attribute है database में, तो age is numeric. तो and as you have seen already, association rule mining या frequent item set mining works on discretized data. ठीक है ना? So if you want to do association rule mining or frequent pattern mining on such types of data, you will have to somehow handle numeric attributes. You will have to discretize them. So remember we studied discretization in data preprocessing. So this is where it is required or needed. So you cannot apply in general association rule mining without discretization. So age would have to be discretized. So let's say आप कोई range define कर सकते हैं, for example 0 to let's say 12, for example. You can give it a label like for example kid, and then for example 13 to let's say 19, you can call it teen, and then for example 20 to 35, you can say adult, young adult, and so on. And then once you have these labels, these would be the distinct values for age, and then you can go ahead and run multi-dimensional association rule mining. ठीक है? But for any given observation, you will only have one possible value. So for any person, you cannot have age is young and age is kid. It will be just one value. So, so if you do this before you actually run the model, then this is called static discretization. Or basically, discretization is done at the pre-processing stage. So discretization done at pre-processing. ठीक है, before you go ahead and apply any item set mining technique. ठीक है, but sometimes I mean you would like to find the discrete labels as well as the rules concurrently. So that is more closer to actually clustering. Clustering हम पढ़ेंगे आगे जाके. But if it is specifically applied to association rule mining, so then we can say that you are doing dynamic discretization. So for example, just to give an example, let's say आपके पास दो attribute है, एक age है और एक salary है. So both of them are continuous valued in general attributes. ठीक है? So you can think of making a 2D plot. So ये figure थोड़ी सी बन, let me see if I can draw this. So basically you can think of this as a 2D plot. So आपके पास x-axis पे age है और आपके पास y-axis पे salary है. ठीक है ना? Obviously both of these ranges are continuous. So you can have an algorithm that actually does discretization as well as finding groups that are frequent together. So for example, you might find a pattern like this, which is frequent.
So which means that a specific interval range of salary and a specific internal range of uh, age together is occurring frequently in the data set. In other words, जो मैंने अभी ये shape बनाई है, ये shaded shape है. So this is a frequent region. And then you might have some other frequent region as well. So maybe एक ये frequent region इधर है. ठीक है? So जो region बनती है, उसका जो भी age या salary आ रही है, that is itself a discretization. ठीक है? तो वो एक खुद ही automatically discretization हो रही है based on the frequency of occurrence of that region. So इस तरह की कोई अप्रोच आप यूज करते हैं विच इज वेरी क्लोज टू क्लस्टरिंग, और इस तरह क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे भी. दे टिपिकली कॉल इट डायनामिक आइटम सेट माइनिंग या डायनामिक एसोसिएशन रूल माइनिंग. ठीक है, तो स्टैटिक में क्या होगा, एज और सैलरी हम पहले ही डिस्क्रिटाइज कर देंगे बेस्ड ऑन आवर डोमेन नॉलेज और बेस्ड ऑन सम अदर टेक्निक जो डिस्क्रिटाइजेशन टेक्निक्स हमने पढ़ी थी. और उसके बाद जो स्टैंडर्ड ए प्रायरी एल्गोरिथम या एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम लगा देंगे. In this case, you don't discretize upfront. You let the algorithm decide कि कौन से frequent या dense regions बन रहे हैं. So this is called dynamic association rule mining, sometimes also called quantitative association rule mining because इसमें सारे quantitative variables. यहाँ of course मैंने दो दिए हैं, there might be multiple. Age है, salary है, maybe height भी है या कोई और variable भी है. ठीक है? So that was quantitative association rules or dynamic discretization for quantitative association. So moving on, just to give you another concept is what is known as multi-level association rules or item sets. So remember, again in pre-processing, we talked about concept hierarchies. Remember, concept hierarchies are kind of arranging attribute values such that values that are at a higher level are broader concepts, while at values are at a lower level are more specific concepts. Okay? So in the context of, let's say, a grocery store, you can have a upper label like bread. ठीक है, higher level पे bread है. उससे lower level पे चले जाएंगे तो depending on how you have done your hierarchies, maybe lower level पे brand आ जाएगा, Dawn आ गया इधर. So for example, Geraldson आ गया and so on. And then as you go down further in the hierarchy, Dawn के अंदर फिर आपके पास white bread आ जाएगी. ठीक है, so brown bread आ जाएगी. ठीक है, maybe milk bread आ जाएगी and so on. इसी तरह जलालसन के भी कुछ options होंगी. So this is a hierarchy. ठीक है, तो so ठीक है, so these are the various breads. So now you can have association rule mining at various levels. So maybe you can say that I want to have association rule mining at the level of the brands, grocery के brands, and जिसमें डॉन आ जाएगा, जलालसन आ जाएगा, उस लेवल पे उसमें आपको आइटम सेट्स क्या मिलेंगे, इस तरह का कुछ आइटम सेट मिल सकता है, डॉन एंड जलाल. ठीक है, and of course there might be others, so this might be an item set. So this is a combination, some Dawn stuff and some Jalal stuff is sold together frequently. Okay? So this item set mining is done at one level. Okay? So which sometimes you can say is intra level
माइनिंग, ठीक है। बट यू कैन ऑल्सो डू इंटर लेवल माइनिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह का पैटर्न ढूंढ लिया कोई, लेट्स से डॉन एंड फॉर एग्जाम्पल ऑफ कोर्स इट हैज टू बी फ्रॉम ए डिफरेंट हायरार्की। डॉन आपने इधर ले लिया तो इसका मतलब सारी जो डॉन की ब्रेड की हायरार्की इसमें इंक्लूडेड है। तो दूसरा जो आइटम होगा इट शुड बी फ्रॉम ए डिफरेंट हायरार्की। सो इट कुड बी फ्रॉम ए जलालसन हायरार्की, और जलालसन में लेट्स से ब्राउन, I don't know if there's something called brown bread, but let's say brown bread है. So of course brown bread is under Jalalsan and dawn of course is above, level above. तो इस तरह का कोई आइटम सेट भी आप ढूंढ सकेंगे। तो दिस वुड बी इंट्रा लेवल, इंटर लेवल सॉरी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंटर लेवल आइटम सेट, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये अब डिसीजंस फॉर द डेटा माइनर these are decisions for the data miner to make, of course based on the domain knowledge, based on the business expert to tell us what type of mining he wants to do. एक level पे करना चाह रहा है, across levels करना चाह रहा है, and so on, ठीक है। so across level में obviously if you do it across level for the entire hierarchy तो बेतहाशा आपके पास चीजें आ सकती हैं। तो you will have to somehow control that. so फॉर एग्जाम्पल एक कंट्रोल का तरीका ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल के ऊपर हायरार्की थी, मेरे पास ब्रेड थी और लेट्स से मिल्क था, और नीचे काफ़ी नीचे जाके मेरे पास फॉर एग्जांपल आ गई स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ब्रेड, लेट्स से वाइट ब्रेड है, ठीक है। वो इसी तरह दूसरे के नीचे लेट्स से 2% मिल्क है, ठीक है। तो सो इफ यू वांट टू डू माइनिंग एट द लेवल ऑफ ब्रेड एंड मिल्क, तो आपको सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड क्या रखना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इफ यू वांट टू डू माइनिंग एट द लेवल ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ब्रेड्स एंड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मिल्क। किसकी काउंट्स ज्यादा होंगी और किसकी कम होंगी, किस लेवल की काउंट्स ज्यादा होंगी, किस लेवल की कम होंगी फॉर एनी ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर। सो वुड सर यू जी सी जितना हम मोर क्या कहते से हैं ग्रैनुलर लेवल पे, जी सॉरी मैं कह रहा था जितना ग्रैनुलर लेवल पे जाते जाएंगे उतनी ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस इंक्रीज होती जाएंगी, तो वो ज्यादा होंगी ऑब्वियसली हमारे पास आइटम सेट उधर। हाँ, तो जितना ग्रैनुलर का मतलब ये कि जितना कोर्स होते जाएं ऊपर जाते जाएं। ग्रैनुलर से जितना उसके अंदर जाते जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वो वाली उस कैटेगरीज में जाते जाएंगे, उतने ज्यादा हमारे पास वो चीज आती जाएंगी। उतने ज्यादा क्या बढ़ रहा है हमारा, मुझे समझ नहीं आई। आइटम डिस्टिंक्ट, सेट्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ डिस्टिंक्ट आइटम्स तो बढ़ रहे हैं, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि सो लेट मी पोज अनदर क्वेश्चन, लेट्स से would you find more sales of 2% milk, more items sold of 2% milk or just milk? कौन सी ज्यादा सेल्स होंगी? ओके, ज्यादा मिलके होंगे। ज्यादा मिल्क की होगी, बिकॉज एट द हायर लेवल इट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ मिल्क, उसमें 2% मिल्क भी होगा, स्किम मिल्क भी होगा, लस्सी भी होगा, सब कुछ होगा इसमें, ठीक है ना। तो और 2% मिल्क इज जस्ट वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिल्क। सो इफ यू वांट टू डू reasonable mining at a top upper level, you might want to reduce the minimum support threshold. Increase the minimum support threshold. Otherwise, you might find too many patterns. और जैसे आप नीचे जाएंगे, you might want to reduce the minimum support threshold से पैटर्न निकल आए, वरना पैटर्न नहीं निकलेगा। तो इस तरह की रीजनिंग आप कर सकते हैं to kind of control this, and then of course domain experts would tell you कि उनको किस तरह की चीज चाहिए। आर दे इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग के सिर्फ कोई भी ब्रेड हो, उस कोई भी ब्रेड के साथ मेरे पास सम स्पेसिफिक बटर बिकता है कि नहीं बिकता, लेट्स से आई डोंट नो नूरपुर बटर, ऑल्दो बटर्स और भी होंगे, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दे वांट टू फाइंड आउट के ऑल ब्रेड्स के साथ ये बटर का क्या हाल है, ठीक है ना। सो इफ दैट इज योर रिक्वायरमेंट देन यू विल हैव टू डू इंटर लेवल आइटम सेट माइनिंग।
ठीक है। सही क्वेश्चन है। अगर हम आगे कहते हैं, जब भी हम मल्टी लेवल एसोसिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास किसी न किसी एट्रीब्यूट की क्या कहते हैं पे हम कंसेप्ट हायरार्की बना ही रहे होंगे। कंसेप्ट हायरार्की किसकी बना रहे हैं? फॉर एग्जांपल हम अगर मल्टी लेवल एसोसिएशन कर रहे हैं तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि हमने कंसेप्ट हायरार्की किसी ना किसी एट्रीब्यूट पे अप्लाई की हुई है, तभी हमारे पास लेवल्स बने हैं। हाँ बिल्कुल। So we need to have ठीक है। some concept hierarchy at the back end that will tell us के वो क्या है। तो अदरवाइज तो आप ओके, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ना कि ये 2% मिलकर कि सिर्फ मिलकर। ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक होगी, डायनामिक हो सकती है? जनरली तो हायरार्कीज तो स्टैटिक ही होती हैं, डायनामिक करने का कोई मुझे रीजन नजर तो नहीं आ रहा, बिकॉज यूजुअली ओके, एंड ऑफ कोर्स इवन इफ दे आर गोइंग टू बी चेंज, दे आर गोइंग टू बी चेंज पीरियोडिकली। कोई नया आइटम आ गया तो वो आपने डाल दिए, इतना फास्ट डायनामिकली चेंजेस नहीं आती हैं हायरार्की में। ओके। तो सो ठीक है, सो दिस इज अबाउट मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल माइनिंग। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बिकॉज इसकी स्पेसिफिक चीजें क्या करनी है, थोड़ा सा डोमेन नॉलेज लगाना पड़ता है, कुछ हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ता है, बिकॉज एज ए मेंशन एट द एंड ऑफ द डे डेटा माइनिंग इज इंटरैक्टिव एंड आइटरेटिव। कुछ मेजर यूज करके, जैसे मैंने कहा कि ऊपर लेवल का करना है तो मे बी आप मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड ज्यादा रख लें, नीचे लेवल का करना है तो कम रखें, अदरवाइज बहुत सारा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह की आपको ऑप्शंस करनी पड़ेंगी। सो आई थिंक ये भी कवर हो गया। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मेन टॉपिक which is constraint based mining. Constraint based mining in general is a general concept, although यहाँ हम specifically for item set mining discuss करेंगे, but constraint based mining is a general concept और उसका general concept का idea भी मैं slide से दिखा देता हूँ आपको। So 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 as we have mentioned, data mining is not really truly automatic. So we have to be interactive and iterative. And to guide our search in general, we have to define constraints. Otherwise, our search space will be too large. We'll find too many patterns, or we'll find patterns that are not interesting. So we do have to assign or guide our mining process towards what we really want. So that is constraint. So this leads to the idea of constraint-based mining. So what are the various types of constraints? We have seen some of these constraints already. So you can think of at various levels of granularity. You can even think of के let's say कोई भी आपको डेटा सेट किसी ने दे दिया, तो आप उसको कह रहे हैं कि उसके ऊपर मैंने आइटम सेट माइनिंग करनी है, let's say. तो ये भी आप कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं. You have put this constraint. So this type of constraint is called knowledge type constraint. So you are interested in only patterns of the type which are combinations of items, item sets. ठीक है ना? Or you might say कि मैंने सिर्फ clusters ढूंढने या मैंने classification model बनाना है. So these are called knowledge type constraints. So you can all think of the data selection as a constraint. ठीक है?
So for example, student data के ऊपर data mining आपने करनी है, तो you can restrict yourself to, let's say, only data for undergrads and not include those for grads. So in a way, you're constraining yourself. Okay? So that such types of constraints you can think of as data constraints. So you can even define more complex queries to define only that part of the data on which you want to do mining. So SQL की query आप लिख सकते हैं, select की query and get that data that you're interested in. So you can also have constraints in terms of features. So dimensions भी कह सकते हैं, जैसे हमने पीछे मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेवल कंस्ट्रेंट्स की बात की थी. आप ये कह सकते हैं कि मैंने जेंडर को इंक्लूड करना है, एज को नहीं करना, फॉर एग्जांपल, या मैंने बाइंग बिहेवियर इंक्लूड करना है या नहीं करना, या जो हमने हायरार्की की भी बात की थी कि मैंने एक हायरार्की बनानी है वैल्यूज की, आइटम की वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज की, और उसके बेसिस पे मैंने इंटर लेवल या इंट्रा लेवल rules देखने हैं. So all of this is a way of specifying constraints. And then rule or pattern constraint. So this is the one that we are going to talk about in more detail now. So in other words, you are specifying your constraint as a rule, as a condition, as a requirement on a threshold, for example. Okay? So you want something to satisfy a specific rule or condition. So these are called basically rule or constraints. So we have already looked at some of these constraints before. So we said that an item set is frequent if its support is greater than minimum support. ठीक है ना? So that is actually a rule constraint. Similarly, confidence strong rules जो होते हैं वो confidence minimum confidence से ज़्यादा होते हैं. So rule constraints can also be specified in terms of templates. So you can call that basically meta rule guided mining. So आप ये कह सकते हैं कि मुझे इस तरह का रूल चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक बाय की कोई चीज हो, एक जेंडर फीमेल हो, और राइट साइड पे भी कोई बाय की चीज हो. So आपने टेम्पलेट बता दिया है कि मेरा इस तरह का रूल होना चाहिए. So this is also a constraint, and you can call this a template type of constraint or meta rule guided association rule mining. ठीक है? So कुछ चीजें आप फिक्स कर सकते हैं, कुछ आइटम सेट फिक्स कर सकते हैं, कुछ प्रेडिकेट सेट फिक्स कर सकते हैं, कुछ ओपन रख सकते हैं, वो ओपन फिर आपको वो फिल करके दे देगा. ठीक है? So given this example, you can get maybe this specific rule from your data set. एज इस रेंज में होगा और स्टूडेंट ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है तो वो आईपैड खरीदता है. So there are specific techniques that can handle this in a more efficient way. Of course, हम इनकी डिटेल्स में ज़्यादा डिटेल्स में जा नहीं सकते. Although जो मेरा फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट था लम्स में वे बैक इन 2005-2006, उसमें इस एरिया में काफ़ी काम किया था. तो ऑफ कोर्स उसकी एप्लीकेशन थी, एक्चुअली शी वाज अ फीमेल. Application was in the area of software engineering, software patterns. So now let's discuss the rule constraints for frequent pattern mining in a more systematic manner. So basically, wait a second. For frequent pattern mining. So if you think of the
rules that we have already used, support of some item set X should be greater than some minimum support, let's say theta. So this is actually a rule constraint. So we want only those patterns or those item sets that satisfy this rule. And we call such patterns frequent patterns. Okay. And similarly, if you think of the confidence of some rule A implies B is greater than, let's say, some minimum threshold, I call it eta. So this is also a rule constraint. Okay. So now let's try to reason or put these rules into some categories. So I will first list those categories and then we'll discuss each of those with examples. So in general, we categorize these rules into 4 or 5 categories, and this is specifically for item set mining, not for, let's say, clustering or classification or something else. Okay. So one we call anti-monotonic monotonic constraint. Okay. And then of course monotonic constraint. And then what we have called a succinct constraint. And then we have what is known as convertible constraint. And then of course none of the above. Okay. So we will categorize some of these rule types of constraints in these 5 categories. Okay. And then see how these can be used. First of all, what are their properties and how they can be used to make our algorithms efficient. Okay. So first of all, what is an anti-monotonic constraint? So anti-monotonic constraint हम first discuss करना चाह रहे हैं. ठीक है? So a constraint C is called anti-monotonic. So C is some constraint. So if and only if you can say so when so anti-monotonic constraint if and only if all patterns X that violate this constraint implies that all super patterns also violate C. Okay? So I think the English is not all that great. So कोई constraint C है. So if there is a pattern X that violates this constraint, then all super patterns of X would also for sure violate this constraint. So such constraints are called anti-monotonic. Okay? So can you think of any constraint that we have already actually studied that is anti-monotonic? सर वो जो सबसेट और सुपरसेट सेट वाला था कि अगर सबसेट इनफ्रीक्वेंट है तो सुपरसेट उसका सेट जो है वो भी इनफ्रीक्वेंट होगा, तो ये एएम मोनोटोनिक में आ सकता है. एंटी मोनोटोनिक, ये एंटी मोनोटोनिक की बात कर रहे हैं हम. जी 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 एंटी मोनोटोनिक में. हाँ जी. तो बट वो तो स्टेटमेंट ठीक है, बट उसका रूल क्या था? रूल तो यही था ना, सपोर्ट ऑफ सम एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, ये था ना रूल. जी सर. ठीक है ना. सो दिस रूल देन इज ए एंटी मोनोटोनिक कंस्ट्रेंट. ओके. ठीक है ना. सो इफ so for example, if there is some item set X which violates this constraint, which means that उसकी support less than theta है, then इसका मतलब है कोई भी super pattern होगा, it will also violate this constraint. ठीक है ना. So
So in that sense, this is a anti-monotonic constraint. So अब constraint का ये तो definition हो गया, but various constraints have various applicability. अब a priori framework आपने जो पढ़ा था, हमने a priori algorithm पढ़ा था, उसमें anti-monotonic constraints were very helpful, as you saw for support x is greater than or equal to minimum threshold, minimum support, because you उससे pruning कर सकते हैं, right? So in the same way, if you have any other anti-monotonic constraint, ठीक है, if you have any other anti-monotonic constraint, you can use it in the a priori framework. ठीक है? So for example, let me say you have another rule like sum of let's say prices of some item set x. Let's say ये grocery store के item set x है, multiple items हैं, ठीक है? X in general is an item set. एक item हो सकता है, multiple items हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है? So let's say this is greater than some, let's say 100 rupees, for example. ठीक है? Less than 100 rupees, let's say. ठीक है? So let's say if you have an item set, let's say मैं grocery store गया हूँ, मैं 2 items खरीदे, एक मैंने let's say चॉकलेट ली और एक मैंने कुछ और ले लिया, तो मेरी टोटल कॉस्ट 100 से बढ़ गई, ठीक है ना? 2 आइटम्स लिए 100 से बढ़ गए, इसका मतलब ये रूल वायलेट हो रहा है, ठीक है? तो अब मैं कोई तीसरा आइटम लूंगा, मेरा आइटम सेट बड़ा होगा, this rule will still be violated, right? Because some of the prices will increase. So this is also a anti-monotonic constraint. ठीक है? So is this point clear? So you can have such many other such types of rules, of course, depending on your application. Let's say मैं एक बनाता हूँ range बनाता हूँ, range of prices of items that I buy X. ठीक है? रेंज का मतलब ये कि मिनिमम और मैक्सिमम में फर्क क्या है, ठीक है? जो भी मैंने सबसे सस्ती चीज खरीदी है, सबसे महंगी चीज खरीदी, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है? सो इफ दिस डिफरेंस इज लेट्स से ओके, क्या होना चाहिए कंडीशन? एक्चुअली वो रीजन करना पड़ता है, लॉजिक इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट समटाइम्स. लेट्स से ये भी मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है? इक्वालिटी को फिर बाद में देखते हैं. ठीक है? सो लेट्स से मैंने लेस लिखा है अभी. सो लेट्स से मेरे पास कोई एक आइटम सेट है जिसमें मैंने 2 चीजें ले ली, और उन दोनों चीजों या मल्टीपल चीजें ली, बट उन 2 चीजें उसमें थी जिसके प्राइस डिफरेंस 100 से ज्यादा था, तो वायलेशन होगी ना. तो जब ये वायलेशन होगी, तो जब भी मैं इसमें और कोई आइटम्स खरीदूंगा, ये वायलेशन तो हमेशा रहेगी, बिकॉज वो 2 आइटम्स तो हमारे पास हैं, ठीक है ना? सो इन दैट सेंस दिस इज ऑल्सो एंटी मोनोटोनिक. ठीक है? Okay, so now so I've given you some examples of anti-monotonic constraints. A priori framework में ये बहुत आसानी से use हो सकता है. Algorithm में you can use these constraints in the same way that you use support. So let's say आप L2 पे थे, frequent आपके पास L2 आया, ठीक है? Obviously आप now multiple constraints इकट्ठे भी चला सकते हैं आप, ठीक है? तो आपने काउंटिंग भी की,
लेट्स से काउंटिंग से सपोर्ट से वो कोई चीज खत्म हो गया तो डिलीट कर दिया, बट किसी लेट्स से सम की वजह से भी कोई चीज डिलीट होगी तो उसको भी डिलीट कर दें। समझ आई बात? So you can apply multiple constraints together as long as both of them are anti-monotonic or multiple of them are anti-monotonic. So again I think quick example थोड़ा मुश्किल होगा इधर. So let's say L2 में मेरे पास AB था, इसकी काउंट 2 थी which is let's say minimum count of 3, तो ये इस वजह से डिलीट हो जाएगा. सॉरी L2 नहीं, ये C2 होगा ऑफ कोर्स, तो ये डिलीट हो जाएगा. बट लेट्स से मेरे पास कोई और था, BC था, बट इसकी काउंट लेट्स से 4 थी, इस वजह से डिलीट नहीं हुआ. बट लेट्स से इसका जो सम था वो क्या वायलेट करना है ना, मैं सम का क्या कंडीशन थी, सम शुड बी ऊपर हमने लिखा था लेस देन, तो वायलेट होगा तो अच्छा ठीक है. सो वी शुड हैव समथिंग लाइक लेस देन. सो सम वायलेट का मतलब है कि ज्यादा हो गया सम. तो लेट्स से सम इसका लेट्स से 120 हो गया, सॉरी 120 हो गया. इसका मतलब है कि 100 से नीचे नहीं है, इसका मतलब ये भी डिलीट कर देंगे इवन दो इसकी सपोर्ट दूसरा कंस्ट्रेंट पास कर रहा था, अब ये वाली कंस्ट्रेंट पास नहीं कर रहा था, इसको भी डिलीट कर देंगे, बिकॉज इसका जो भी सुपरसेट बनेगा वो वायलेट करेगा. ठीक है. सो इन अदर वर्ड यू विल बी चेकिंग ऑल द कंस्ट्रेंट साइमल्टेनियसली, और किसी भी कंस्ट्रेंट की वजह से कोई आइटम सर डिलीट हो रहा है, इसको डिलीट कर दें. ठीक है. So now let's move on to the next type of constraint, monotonic constraint. So this, as the name suggests, is the opposite of anti-monotonic. So इसमें basically ये है कि C is monotonic if and only if all x's that satisfy C so if x satisfies then all its super item sets also satisfy C. ठीक है. ठीक है. सो ये उसका उल्टा है, उसमें था वायलेशन एंड वायलेशन, इसमें सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन फॉर बिगर आइटम सेट्स. ठीक है. तो इसमें एज यू कैन अज्यूम के ऊपर वाले जो कुछ दो एग्जांपल्स है उसको उल्टा कर दें तो वो मोनोटोनिक हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल सम प्राइस of some item set x. So if this is satisfied, for example, greater than some, let's say 500, if this is satisfied, then all supersets of x would also satisfy this because sum तो बढ़ेगा ही. ठीक है. So this is basically then a monotonic constraint. ठीक है. एंड सिमिलरली रेंज को भी आप उसका जो कंडीशन उल्टी कर दें तो वो मोनोटॉनिक हो जाएगी. अब ए प्रायरी एल्गोरिथम में इसका क्या फायदा है? इफ यू हैव ए कंस्ट्रेंट दैट इज मोनोटॉनिक, लेवल बाय लेवल में मोनोटॉनिक कंस्ट्रेंट ए प्रायरी फ्रेमवर्क में यूज हो सकती है, बट उसका यूज सिर्फ इस हद तक है कि जब आपने देखा कि एक आइटम सेट सेटिस्फाई कर रहा है, लेट्स से यू कैन से दैट जो पीछे एग्जांपल दी थी BC सेटिस्फाई कर रहा है, देन BC के जितने भी सुपर सेट्स हैं वो भी सेटिस्फाई करेंगे. मतलब BC के जो सुपर सेट अगले लेवल्स में बन रहे हैं वो भी सेटिस्फाई करेंगे. फिर उनको सिर्फ चेक नहीं करेंगे आप,
because you know for sure they are going to satisfy. ठीक है, so ये थोड़ी सी आपकी आप कह लें कि वर्क कम हो जाएगा, डिलीशन नहीं होगी बट चेक नहीं करेंगे आप. तो एंटी मोनोटोन में तो आप चेक करके उसको डिलीट कर देते थे ना, यहाँ आप आपको पता चल गया जब एक सेटिस्फाई हो गया तो उसके बाद फिर आप उसको फर्दर चेक नहीं करेंगे, तो ऑलवेज सेटिस्फाई. ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस? ठीक है, so let's move on to the third category, which is called succinct. So succinct constraint are those constraints that uh, that can be applied or checked without going through any complicated algorithm, or they can be checked very easily. किसी का क्वेश्चन था? I missed it. अच्छा चलें, जो भी है. Okay, so succinct constraints are those that can be satisfied directly on the item set without going through the step-by-step procedures that we have studied so far, like a priori or FP growth or vertical data format. So isme, and you can say they can be checked outside the framework of the frequent item set mining algorithms. So isme jo example aata hai, for example, you can think of min price of items X, item set में जो items X है, is let's say less than 100. So in other words, we want to only have item sets X that do contain at least one item with a cost or price of less than 100. ठीक है ना? So this actually is very easy to find and check. You don't need to run any complicated algorithm. So you can simply make a list of items that have a price of, so let's say S is the set of items with price less than 100. Okay? Then any item set that contains any item from S would satisfy this. Okay? So let's say हम अपने कुछ छोटी सी ग्रोसरी स्टोर की बात करते हैं, तो इसमें जो आइटम्स आ जाएंगी, लेट्स से आई डोंट नो 100 रुपए से कम क्या चीज होती है आजकल. एनीवे वो क्या होता है, पान मसाला फॉर एग्जांपल, एंड मे बी ए कपल ऑफ अदर आइटम्स, वो आप इस सेट में डाल देंगे. जब भी पान मसाला किसी भी आइटम सेट में आएगा, इसका मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है. या इन अदर वर्ड्स, इस आइटम सेट जो सेट है एस, इसमें से जो भी आइटम्स किसी भी आइटम सेट में डाल दें तो वो सेटिस्फाई कर देगा. एक डालें या मोर डालें. ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड सक्सेंट. तो हमने कोई ए प्रायरी फ्रेमवर्क में डालने की जरूरत नहीं है या एफपी ग्रोथ में डालने की जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली चेक एंड वेरीफाई and find all such patterns that satisfy this constraint, and these constraints are called succinct. So इसका जो उल्टा है वो भी succinct है. max let's say ले लूं मैं, price so let's say of x greater than let's say 10,000, 1 2 3.
So we want to find all item sets, all baskets that are purchased in which there is at least one item with a price greater than 10,000. ठीक है ना? तो ये तो भी बहुत आसान है, आपने स्टोर में जाएं, उसकी लिस्ट बनाएं, जो भी एक सिंगल आइटम्स की प्राइस 10,000 से ज्यादा है वो एक लिस्ट बन जाएगी, एक सेट बन जाएगा. कोई भी आइटम सेट में वो उस सेट में से एक भी आइटम आ रहा है तो इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई. ठीक है. Okay, so now moving on to convertible. By the way, there are some constraints. For example, अच्छा पहले convertible discuss कर लेते हैं, फिर we mention that. So some constraints can be converted from monotonic to anti-monotonic. Anti-monotonic and monotonic. By simply changing the order of the items in the item set. ठीक है? So such constraints are called anti-monotone. So उसमें जो बड़ा common example है वो average क्या है? Average price of some items in an item set X is, let's say, less than, let's say, 500. ठीक है? So this rule in itself is neither anti-monotonic or monotonic. Because आपको पता है कि let's say कोई item set है, उसमें let's say मेरे पास so less वाला यूज कर रहा हूँ. let's say मैं violation की बात करता हूँ. मेरे पास एक item set है, मैंने जाके दो burgers ले लिए, तो easily my amount is above 500. ठीक है? ठीक है? But which means it violates this constraint. But let's say उस दो burger के बाद मैं 10 और items ले लेता हूँ जो सिर्फ 10-10 रुपए की हैं. So my average would come down until it might even become less than 500. Average ले रहे हैं ना? So it might even become less than 500. So there is no such guarantee कि एक set का size violate कर रहा है तो अगला set का size, bigger size would not violate. ठीक है ना? But is there anything that you can do to ensure that this condition would hold? Ordering में change कर सकते हैं आप? Ordering of the items in the item sets. So is there any ordering in which this would maybe become? ठीक है? So basically, if you order the items, so here we are. So violation means that it's greater than 500. So if you have frequency price ascending order, meaning that के let's say price descending order, पर आपने जो भी item set बनाना है पहले costly item डालेंगे, उसके बाद less costly होगा, उसके बाद less costly होगा, उसके बाद less costly होगा. ये order आपने रखा हुआ था, then this would become anti-monotonic. Why? Because जब पहले violation होगी है, उसके बाद जो भी items आप डाल रहे होंगे item set में बड़ा करने के लिए वो छोटे prices के होंगे, average बड़ी ही रहेगी. ठीक है? So such type of constraints are called convertible. Or in this particular case, average can be made convertible to anti-monotonic or it can be converted to monotonic. Ordering हम उल्टी कर दें small to large तो ये monotonic हो जाएगा. So these constraints are called strongly convertible. ठीक है? But let's say जब हम a priori algorithm लगाना चाह रहे हैं तो खैर a priori में convertible वैसे सही चलते भी नहीं है, तो that may not be a good example. But happy growth में लगाना चाह रहे हैं तो हमको ज़्यादा प्रेफरेंस क्या होगी? हम एंटी मोनोटोनिक बनाएंगे कि मोनोटोनिक बनाएंगे?
So we'll probably make it anti-monotonic. It will make the search much easier. Monotonic में जैसे checking आपकी खत्म होती है. अच्छा, ठीक है. I think time वैसे कम हो रहा है, but I think interactive जो आज लोग सारे क्विज का वेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कोई फीडबैक कम ही मिल रही है जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. So we are almost done with this. I think we have, I think, just 5 to 10 more minutes, but probably आज खत्म नहीं होगा. We have just 4 minutes left. ठीक है. So I think I'll probably stop here. Then if you have any questions, we can do them right away. And then of course 6:05, 6:06 तक आपका quiz है. Sir, जी. ये जो हमने आज पढ़ा है, ये किस chapter से है in the book? This is the chapter 6 from data mining concepts and techniques. Chapter 5 था standard techniques और chapter 6 था शायद advanced technique. Title का नाम, chapter का नाम कुछ इस तरह का है. ठीक है. Thank you. So any other question? So your midterm exam, of course, is the end of next week. Okay, and the content would include the lecture of next Monday, till the lecture of next Monday. So anything else? So you have been assigned projects. So projects are an interesting way of exploring data mining because you have some, you can say, more flexibility in choosing the techniques and choosing the tools as compared to the assignments. And of course, open-ended B questions में होते हैं. So please do exert yourself in the projects. You learn a lot in the projects. So all the projects I have reviewed them, they're quite interesting. The data sets are real world, they are reasonably large, and you might find very interesting stuff while mining those data sets. So I think that's pretty much it from my side.